How are you all? प्रणाम प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है बाबू? चप्पंडी ये क्या है? दो पूछ लो साहिल गारू। कौन रोकेगा आपको? Who is going to stop you? I'm good, Rahul. गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। अरे क्या हो गया के इतना इरेगुलर हो गया आप क्लास में? आफ्टरनून तो नहीं आ गया अभी तक हर्ष जी। माइनस एलएन कैसे सॉल्व किया? माइनस एलएन कैल्सी से निकलना चाहिए ना। एलएन इज इक्वल टू लॉग ई। एलएन इज लॉग ई। सो माइनस निकालो, हो जाएगा ना बेटा। कौन बहुत परेशान कर रहे बाबा? कृष्णा गारू कॉलेज वाला। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सतीश शर्मा। चलो हम किसका बारे में बात कर रहे हैं? नो, प्रीवियस वन तो खत्म करना पड़ेगा। मुकरम यू कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। विल डू सम क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा, ट्राई करो समझ होने के लिए। प्रणाम प्रणाम, गुड मॉर्निंग। नो नो, न्यू नॉट न्यू चैप्टर। हम रेशनल मेथड का बारे में नहीं बात किया ना। रेशनल मेथड में क्या बात किया? डिटेल में नहीं बात किया, ओनली फार्मूला डेरिवेशन कर लिया हम। वी डिड ओनली फार्मूला डेरिवेशन फॉर रेशनल मेथड। Q is equal to CIA upon 360. Good morning, Acha Garu. How are you? Good morning, Srirag. So Q is equal to CIA by 360. Discharge meter cube per second. Now C is said to be coefficient of runoff. इसको बोल सकते हैं रेशियो ऑफ रन ऑफ टू रेनफॉल। क्या बोल सकते सी का बारे में? फ्रैक्शन ऑफ रेनफॉल। फ्रैक्शन ऑफ रेनफॉल converted into runoff. Fraction of rainfall converted into runoff. That we are going to say yes, obviously your weight, patience is very important. Acha Garu, you can get easily. Your patience only will give you the result, no doubt. How much amount of rainfall is converted into runoff? That fraction of rainfall converted into runoff. Fraction of rainfall converted into runoff. That is said to be coefficient of runoff. For example, this is the catchment. In this catchment, okay, Gaurav, no issue. ठीक है बेटा गौरव, कोई दिक्कत नहीं. Having coefficient here C1, area A1, and this is another one, another region coefficient C2, area A2. This is another region coefficient C3, area A3. ऐसा भी हो जाएगा बेटा, जिंदगी ऐसा भी हो जाएगा आपको. So now we are talking for the entire area. We are talking for the entire area. What should be coefficient of runoff? What should be coefficient of runoff? C is equal to
C1 A1 C2 A2 weighted average ना. इधर निपुण मेथड तो नहीं चलेगा, हम वेटेड एवरेज तो चलेगा. अरे हम भी रिकॉर्डिंग में क्लास करेंगे. ओके सौरव जी, हम भी रिकॉर्डिंग में करेंगे. चलो बेटा, एवरीवन आस्किंग रिकॉर्डिंग, हम भी रिकॉर्डिंग चल के रिकॉर्ड करके दिएगा, हो जाएगा. निपुण गारू आपका मेथड नहीं चलेगा, इधर वेटेड एवरेज ले लो. वेटेड एवरेज C1 A1 plus C2 A2 plus C3 A3 and so on, A1 plus A2 plus A3 and so on. कॉमन कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ मिलेगा ना, कॉमन कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ मिलेगा ना. ओके ओके सौरव भैया, बाय बाय. नाउ हो गया, सी आ गया, सी आ गया, सी इज ओके, डन. ये इज एरिया ऑफ कैचमेंट, एरिया ऑफ कैचमेंट हेक्टार में ले सकता है. वी हैव टू टेक hectare area of catchment. Then I is said to be intensity of rainfall. I is said to be intensity of rainfall. Okay, intensity of rainfall कैसा आएगा? Intensity generally will take it as a depth by duration, depth by time. ये नहीं दिया तो intensity is equal to 25.4 A upon TC plus B. Intensity is equal to 25.4 A upon TC plus B. So this is the empirical equation to find out intensity based on time of concentration. So TC taken in minutes. Intensity मिलेगा हमको, intensity मिलेगा हमको millimeter per hour. This is empirical equation. So what are A and B? A and B constants based on TC. Those who attend environmental पता है ना? Those who completed environmental आपको पता है ना? Constants based on TC. A and B. Constant based on time of concentration. Constants based on time of concentration. A and B. ये क्या होता है? A and B टाइम ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स. सो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का वजह से टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू 20 मिनट्स. फर्स्ट केस बोल रहे हैं हम, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन लेस देन और इक्वल टू 20 मिनट्स. A is 30, B is 10. टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू 20 मिनट्स. A is 30, B is 10 minutes. टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 20 मिनट्स. टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 20 मिनट्स. A is 40, B is 20. The constant values आप ये by heart करना पड़ेगा, compulsory you need to by heart those values not given in data. So आपको TC के बारे में बता देंगे क्वेश्चन में. You have to take based on TC value A and B. A is 30, B is 10, A is 40, B is 20. Based on time of concentration you are going to get values. So I is equal to 25.4 A upon TC plus B. क्या आपका इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है क्या? क्या रे कृष्णा, इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है क्या आपका मैसेज? रूटिंग मेथड क्या है? रूटिंग मेथड साहिल बोलो, व्हाट इज रूटिंग मेथड? डन. दिस स्लाइड आल्सो डन. दिस स्लाइड आल्सो डन. रेटिंग इज इक्वल टू बाय हार्ट. ओके, रेटिंग इज इक्वल टू बाय हार्ट. अरे आपको कैसा लगा? व्हाटएवर यू फील, हाउ you feel to do the class, nobody can stop you. This is your future. Okay, yesterday also I told very clearly, the students going to say so many reasons, so many excuses not to study, not to come to the class, not to write the test. After all, finally you understand the effect end when you get result. How much sincere, how much consistent, how much dedicated, purely that depends on you. We are here to give 100% effort or even more than 100% effort. That depending on you whether you continue the class, whether you irregular to the class, that purely that defines your result. That purely that defines your result. चलो, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन तो मिल गया, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन तो मिल गया. देन विल टेक ए एंड बी. ए एंड बी सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटेंसिटी मिलेगा. ए एंड बी सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटेंसिटी मिलेगा. सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. व्हाट इज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन? क्या होता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टीसी. टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टीसी. दिस इज द कैचमेंट. दिस इज द कैचमेंट. नाउ रेनफॉल अकर्ड एट सम अदर लोकेशन. रेनफॉल अकर्ड, बारिश तो हो गया इधर. Rain water droplet is going to hit the ground at this point. At this point. So this is the horizon farthest point. Now the rain water droplet has to travel this much distance to enter into stream.
To enter into catchment, this can travel this much distance to enter into stream rainwater droplet. This is called a time of entry. This is called time of entry. Now, यहाँ से outlet को चलना पड़ेगा. Water must travel from here to outlet. It can travel. Finally, it come to outlet. Then this time taken to reach the outlet. This time taken to reach the outlet. इनको क्या बोलते हैं? Time of flow. So from that farthest point of entry till it reach the outlet, how much time is taken? That is called time of concentration. Time of concentration, time of entry, TE. Time of flow, TF. The time taken by the rainwater droplet. 1 minute में आएगा बेटा. Please finish this. So the time taken by the water droplet to reach from point of entry to point of exit, that is said to be time of concentration. So we can write here. Completed this slide. Now we'll move on to next slide. The time taken by rainwater droplet. The time taken by rainwater droplet. हाथ सॉल्व करेगा, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेगा. क्यों टेंशन में चल रहे सत्येंद्र? पूरा सॉल्व करेगा. The time taken by rainwater droplet to travel from farthest point, or also we call remotest point. Farthest point or remotest point of catchment. इसको क्या बोलते हैं? Point of entry बोलते हैं ना. We call it as point of entry till it reaches outlet of catchment. That is point of exit. Is called as time of concentration. Is called as a time of concentration. TC. Yes, every droplet can vary ना. Droplet to droplet it can vary ना Sahil. ये droplet को TC different है, ये droplet को TC different है. इधर से और एक आ गया तो ये droplet को different है. If rainfall fall down here, then for this TE0 होता है. Only TF होता है. Every droplet can carry its own time of concentration. But we can take it one value for the catchment. We'll consider it one value for the catchment. TC is said to be shortest duration of rainfall. TC is said to be shortest duration of rainfall. Time of concentration is the shortest duration of rainfall. Now we'll talk about TC based on catchment characteristics. So how much time it will travel depends on catchment characteristics. Na? Length of travel and slope. Yes or no? Length of travel and slope of catchment तो depend करेगा ना. इनको बोल रहे हैं हम Kirpik's equation. TC based on catchment characteristics. Time of concentration based on catchment characteristics. 0.01947. ये तो constant value है. 0.01947. L power 0.77. S power minus 0.385. ये तो स्टेट एग्जाम को एसएससी को इंपॉर्टेंट है. गेट में ऐसा नहीं निकलेगा. गेट एग्जाम को ये फार्मूला इंपॉर्टेंट. दिस इज फॉर गेट एग्जामिनेशन. दिस टीसी फार्मूला इज फॉर गेट एग्जामिनेशन. दिस फार्मूला इज फॉर ईएससी, येई जेई एग्जामिनेशन. Kirpik's equation. L is length of catchment taken in meter. S is gradient, slope. TC you get in terms of minutes. TC तो time of concentration तो minute में आएगा. So that you can solve the time of concentration based on dimensions of catchment. The shortest time to reach from inlet to outlet. Inlet से outlet तक जाने के लिए shortest time क्या होता है? इनको निकलना पड़ेगा. That should be the shortest duration of rainfall. Time of concentration. Clear? और किसी को डाउट है इनका बारे में? है 1947 इंडिपेंडेंस क्या है? Kirpik's equation में constant value
अरे आप तो हर एक चीज में मीन वैल्यू को देने के लिए कोशिश कर रहे हो. व्हाट इज दिस सतीश गारू? व्हाट इज द पिक्चर यू सेंड हियर? इट डज नॉट लुक लाइक. Okay, this is a dry structure. No water, check dam. This is a check dam. Dry structure, check dam where no water is available. पानी तो नहीं है इधर, पानी तो नहीं है. चलो, we'll solve questions now. We'll go with questions first. So infiltration rate. Select the correct answer. Forested loam, loam passer, sand, bare clay. Good morning, Musabir. So I told you also already previous 2024 ESC एग्जाम में हाइड्रोलॉजी इरिगेशन से 8 क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग. 8 क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग 2024 इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम. सो हियर आपको ट्रिक बनना चाहिए, आपको थोड़ा ट्रिक बनना चाहिए. बस दिव्यांशु रिफ्रेश करो, दिव्यांशु एक बार रिफ्रेश करो. ट्रिक क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन रेट इज मोर इफ पोरोसिटी इज मोर. सॉइल्स परमिएबिलिटी मोर, सॉइल्स परमिएबिलिटी मोर, परमिएबिलिटी हाई, इन्फिल्ट्रेशन हाई. सो क्ले सॉइल कैरी लोएस्ट. दैट इज द ट्रिक. क्ले सॉइल कैरी लोएस्ट. व्हाट इज लोएस्ट? 0 to 4. Lowest is 0 to 4. So you can give it 2 here. Completed remaining. So last one को 2. खेल तो खत्म हो गया, खेल तो खत्म हो गया ना. तो थोड़ा दिमाग, कॉमन सेंस तो यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. लोएस्ट इन्फिल्ट्रेशन रेट, लोएस्ट इन्फिल्ट्रेशन रेट पर क्लिक. सो यू टेक रिमाइनिंग 4 3 1 2 4 1 3 2 सॉरी 4 1 3 2 4 1 3 2. फॉरेस्टेड लोम में एक्सपैंडेड फोर्स होता है निपुण, बिकॉज रूट्स हैव पेनिट्रेटेड वेरी डीप ना. फॉरेस्टेड लोम में प्लांट्स आर देयर, प्लांट रूट्स आर पेनिट्रेटेड वेरी डीप, सो एक्सपैंडेड फोर्स होता है, इनका वजह से ज्यादा हो गया. 4 1 3 2. सो वी हैव रेगुलरली विल टेक टाइप ऑफ सॉइल, परसेंटेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन रेट mm per hour. टेक दिस टेबल, आपको पूरा समझ आएगा बेटा. टेक दिस टेबल फॉर क्ले. If it is a percentage, only 1 to 5% of total rainfall. Rainfall में, in total rainfall, 1 to 5% only undergoes infiltration in clay soil. It can be given 3 to 8 mm per hour. They talk about clay loam, 5 to 10% infiltration, 7.5 to 9 mm per hour. Rate में. We'll talk about loam. Loam क्या होता है? 10 to 20%. 10 to 20%, 9 to 13 mm per hour. 9 to 13 mm per hour. अब तो बोल रहे सैंडी लोम 20 to 30%, 11 to 16.5 mm per hour. सैंडी लोम. सिर्फ सैंड सॉइल को अप टू 30%, नॉट मोर देन दैट, अप टू 30% होगी. बट रेट तो ज्यादा होता है 19 to 25 mm per hour. सो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर अस. सो दिस टेबल, एक बात सुनो, गेट स्टूडेंट्स को ना चाहिए, ओनली ईएससी स्टूडेंट्स फोकस करो बेटा. इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन फोकस करो. ले लो टेबल. बहुत ज्यादा है निपुण गारू, बहुत ज्यादा है. लोम सॉइल कैसा होता है जियोटेक में समझ आएगा, पिक्चर मिलेगा आपको. इमरान, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में लोम सॉइल कैसा होता है पिक्चर मिलेगा. इधर तो ऐसा छोड़ दो, सॉइल का बारे में उधर भी बात करेंगे. चलो, दिस इज कंप्लीटेड एवरीवन. So now we are talking about runoff coefficient. Runoff coefficient. एक बात सुनो बिफोर सीइंग द क्वेश्चन. रनऑफ कोएफिशिएंट ज्यादा होता है व्हेन सॉइल इज कंप्लीटली इम्परमिएबल. फॉर एग्जांपल कंक्रीट रोड, ईच एंड एवरी वाटर ड्रॉपलेट फॉलिंग ऑन द कंक्रीट रोड 100%. क्या हो गया? ईच एंड एवरी ड्रॉपलेट फॉलिंग डाउन ऑन टू द कंक्रीट रोड 100% विल फ्लो. 100% विल फ्लो बिकॉज 0% इन्फिल्ट्रेशन. 0% इन्फिल्ट्रेशन. कंप्लीट वाटर विल गो अवे. 0% इन्फिल्ट्रेशन. 100% runoff. So now you read options. Wooded areas, gravel roads and walks, macadamized roads, water tight roof surface. ये पता है वाटर टाइट में वाटर एब्जॉर्प्शन कम रहता है. सो रन ऑफ मैक्सिमम ना, वाटर एब्जॉर्प्शन कम, लेस रन ऑफ मैक्सिमम. सो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ओवर हियर? 0.7 to 0.9. सो यू कैन टेक 1. क्वेश्चन हो गया. एनी डिफिकल्टी? ये बात सुनो, इधर कॉमन सेंस है. कॉमन सेंस के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए. If you are solving this question, you must understand what is rate of infiltration, how it is related to soil permeability, porosity, void ratio. Same. When you are writing this, what is coefficient of runoff, how it is related to soil surface, you must know, then easily you can solve the question. देखो, concept समझ होने के बाद आसान हो गया क्वेश्चन. 3 to 4 1. ये वैल्यूज तो नहीं लिखना चाहिए. Don't write the values. Okay? वैल्यूज तो नहीं लिखना चाहिए. इनको थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर हो जाएगा. Because so many surfaces are there. They have given only few here. We have 80 different surfaces are there. We can't by heart the values. So you just do
depending upon the soil type or depending upon the void condition, surface condition, you can give the values. ऐसा common sense में निकल जाएगा. Macadamized roads. अरे macadamized roads means bituminous roads. चलो और क्या होता है next? Next what we are going to have 1 minute. I will bring on the questions. चले गए कृष्णा चले गए क्लास पे. Catchment of area 200 hectare. Catchment of area 200 hectare. Runoff coefficient 0.5. Runoff coefficient 0.5. Storm duration of larger than time of concentration of catchment. Intensity given 3.6. So what is runoff? आसान है ना. Intensity given, area given, C given. हो गया काम. Just formula substitution. भाई कृष्णा गारू आपका दोस्त आ गया मिलने के लिए. देवू मालिया देव and मयूर गारू दोनों आ गया हमारे घर के. They are here only sitting in my house. CIA by 360. CIA by 360. C is 0.5. Intensity 36. Area 200. Area 200. हाँ अरे क्या कैमरा में लाना पड़ेगा क्या? अरे बाबा 0.5 into 36 into 200. 10 हो गया 10 मीटर क्यूब पर सेकंड. 10 मीटर क्यूब पर सेकंड. देखो और एक क्वेश्चन. आई टोल्ड यू ना दिस इज ईएससी का फेवरेट क्वेश्चन. बार बार दे देखो. 90 हेक्टार एरिया, runoff coefficient 0.4, intensity 4.5. 0.4, 45, 90 divided by 360. देखो वहां भी कंफ्यूज करेगा, हम ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. देखो ये तो मिलीमीटर में लेना पड़ेगा बेटा. 4.5 सेंटीमीटर पर आवर. यू मस्ट टेक इन मिलीमीटर 45 mm per hour. 45 mm per hour. So now what are you getting? 4.5 meter cube per second. Why C coming? लक्की गारू क्या हो गया रे बाबू लक्की? Why you are getting C? Understand everyone? सत्येंद्र बाबू चले गए क्लास में. समझ आ रहे ना? आसान क्वेश्चन तो. और एक बार देखो एरिया 60 हेक्टार, सी वैल्यू 0.4, आई वैल्यू 3 सेंटीमीटर. चलो चलो देखो ये मेथड, ये क्वेश्चन निपुण गारू मेथड से आसान है ना. इट इज इवन इजियर देन निपुण मेथड. 0.4, 30, 60 by 360. 2 meter cube per second. So every year it is coming. Every year it is coming. 2010, 2003, 2009. निपुण मेथड इज सिंपल मीन. अर्थमेटिक एवरेज सिंपल मीन. 25 में आएगा. अच्छा गारू टेंशन में मत चलो, आएगा. Catchment of 30% area, runoff coefficient of 0.4. 70% area, runoff coefficient 0.6. अरे इतना आसान. C is equal to 30 into 0.4, 70 into 0.6 by 100. Weighted average देखो इतना आसान होता है. देखो weighted average 0.54. देखो 2010 में एक क्वेश्चन आ गया. अगेन 2010 में सेकंड क्वेश्चन. ओनली फ्रॉम runoff चैप्टर 4 मार्क्स. 2 क्वेश्चंस. आसान हो गया ना दोनों में. क्लियर टू एवरीवन? वेटेड एवरेज में चल रहे बच्चे लोग ये देखने के बाद सोच रहे हम गेट छोड़ के ईएससी को तैयारी करेगा. अरे बेटा ईएससी को तैयारी करेगा बट हाइड्रोलॉजी तो आसान है. रिमाइंडिंग को इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा. चलो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन एट द आउटलेट इन एन अर्बन एरिया ऑफ कैचमेंट, एरिया 1.5 किलोमीटर स्क्वायर. सो पहले हमको एरिया कौन सा यूनिट में चाहिए? हेक्टार्स में चाहिए. 1 किलोमीटर स्क्वायर इज 100 हेक्टार. 1 kilometer square is equal to 100 hectare. So 150 hectare. Runoff coefficient is 0.42. C 0.42. Time of concentration 28 minutes. Maximum depth of rainfall with a 50-year return period. Maximum depth of rainfall provided 48 mm. Precipitation maximum 48 mm. What should be Q? Peak flow rate. Q max. Don't go with the tension. Don't go by 25.4A formula, please. Don't go with the 25.4A formula, please. Because we have time and we have depth. We have time and we have depth. So you get intensity, depth by duration. Depth by duration. But ये duration तो hour में होना चाहिए. 48 by 28 by 60. समझ आ रहे? मिनट्स है ना, मिनट्स. मिनट्स तो hour को कन्वर्ट करना पड़ेगा. We have to convert minutes to hours. 48 by 28 by 60. What are you getting now? हाँ मैसेज करो, ऐड करेगा हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं. विल ऐड यू. व्हाट्सएप मैसेज करो, मेरा नंबर है आपके पास. हिमांशु मेरा नंबर है आपके पास? नो. अरे बाबा. सो 108.25 नंबर ले लो, व्हाट्सएप करो, आई विल ऐड यू. अभी तो मैक्सिमम डिस्चार्ज होना चाहिए हमको. सी वैल्यू 0.42. इंटेंसिटी अभी आ गया 102.85. एरिया 150 हेक्टार बाय 360.
Yes, obviously अच्छा गर्ल, we just cut it out, we can get the answer. But हम ऐसा बोलने के बाद ना बच्चे लोग ऐसा पूछेगा, they can do in GATE exam also. So we'll make them to learn here. एग्जाम में तो दिमाग यूज करके सॉल्व करेगा, क्योंकि गेट में हर एक डेसिमल इंपॉर्टेंट होता है ना अच्छा गर्ल, ईएससी को तो नहीं है, बट गेट में इवन 0.04 0.02 भी वैल्यू होता है कभी कभी. वी हैव सीन स्लजिटाइजेशन का क्वेश्चन में, स्लजिटाइजेशन का क्वेश्चन में ऐसा दिया ऑप्शन 3.96 4 4.04, इतना डेसिमल भी, हाँ इतना डेसिमल भी वैल्यू होता है, इंपॉर्टेंट होता है हमको, सो दैट वी नीड टू मेक देम लर्न एक्यूरेट. ईएससी में मैनुअल कैलकुलेशन है, हम नहीं बोलना पड़ेगा, द पीपल इटसेल्फ दे कैन राउंड ऑफ, दे देमसेल्फ विल बी राउंड ऑफ, नो इश्यू. We can solve like this actually. We can solve like this question. 48 minutes by 30 by 60. You can cut off 0.5 ले लो. So you can double it and you can take instead of 28 by 60. No problem. आस पास में आएगा आंसर. आस पास में आएगा आंसर. कोई दिक्कत नहीं. चलो. देखो आओ एक बार. ऐसा भी हो जाएगा कृष्णा गारू. 2009 में ये क्वेश्चन सॉल्व किया ऑलरेडी देखो. 2009 में देखो. 2009 में Q is equal to CA by 360. Again 2009 में और एक क्वेश्चन वेटेड एवरेज. बोलो फटाफट. वेटेड एवरेज करके वैल्यू बताओ फटाफट. सिंपल. ये दोनों का वेटेड एवरेज करो बेटा. ये दोनों का वेटेड एवरेज करके बताओ फटाफट. जीरो पॉइंट फोर. चलो समझ आ गया. चलो while applying the rational formula for computing the design discharge, rainfall duration is stipulated as a time of concentration. This is gate question. So while we are taking rational formula, rainfall duration is taken as a TC. Why? I will give in the poll. Give in the poll, please. Give in the poll. So rainfall duration is stipulated as a time of concentration. Smallest rainfall duration है तो बोल दिया, लिख दिया है ना नोट्स पे. Shortest duration of rainfall for which rational formula is applicable. Time of concentration is the shortest duration of rainfall. अरे रिटन ना नोट्स में, इतना अच्छे से लिख दिया नोट्स में. देखो बेटा एक बार चेक करो, एक बार नोट्स में आया भाई. $54 hectares of land area, 50 mm per hour intensity, 30% 0.9, 30% 0.2, 40% 0.4. सो पहले तो सी निकलना पड़ेगा. 30 into 0.9, 30 into 0.2, 40 into 0.4 by 100%. You get a C. 0.49. 0.49 into 50 into 54 by 360. 3.675. Two formulas. One is weighted average, second one CA by 360. This many questions we are having. चलो हो गया. Lakshmi Garu, are you completing? I hope we are doing faster because same question, every question carries same formula, na? That is why फटाफट we are doing. Same 150 hectare area, rainfall runoff ratio C 0.4, 10 centimeter rainfall for 10 hour duration. Intensity 10 centimeter for 10 hour. 1 centimeter per hour, 1 mm per hour, 1 mm per hour. ये मत कर ले राहुल. Don't waste your time on unnecessary things, Rahul. Q is equal to C 0.4, 10 mm, 10 mm, 10 mm. I diverted to Vedic max. That is why I wrote 1. 10 mm, 150 hectare by 360. So what are you getting by this exact? पहले तो ये बोलो, what are you getting by this exact? निपुण जी, देखो 1.667 meter cube per second. No option. No option. Converted to minute. 1.66 into 60. 100 meter cube per minute. आ गया. Small variation. So please understand. Options में meter cube per hour, meter cube per minute, meter cube per second. Options देखो एक बार.
मीटर क्यूब पर आवर, मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया ऑप्शंस में, हर एक चीज चेक करना पड़ेगा. So Lakshmi absent today. Again, so many people absent today. Abhi Shinde absent, Aditya Dage absent, Risau Tinda absent, everyone absent. DMart. के तो रिप हो गया ना, के तो रिप. आटा गारू मिस्त्री हो गया, पैसा मिल रहा है इनको. क्यों आएगा क्लास में नहीं आएगा ना. मिस्त्री हो गया, मिस्त्री हर एक दिन इनको 600 रुपीस देता मिल गया. 600 रुपीस पर डे इज गेटिंग. ओके लक्ष्मी गारू, आई हैव सीन योर कमेंट. चलो. हाँ ऑब्वियसली ना बबलू, नॉट इंडियन. The extreme flood which is physically possible in a region from severe most combination including rare combinations of meteorological and hydrological factor. इधर तो एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम नहीं इंपॉर्टेंट हमको, फिजिकली पॉसिबल देखो बेटा, फिजिकली पॉसिबल. अरे हम एक्सट्रीम देखने के बाद बी दिएगा. ज्ञानेंद्र, आशीष भैया, निपुण गारू, by seeing extreme we are giving B. So physically possible is a probable maximum flood होता है. Physically possible probable maximum flood होता है, please understand. Average annual rainfall of area 365 hectare. B के लिए no physically possible. If that disappear physically possible, not written B. Extreme flood that in a region severe most combination, rare combination, no word of this. That is B. Area given, depth provided, factor given C. Runoff discharge in meter cube per day. चलो we'll go with पहले इंटेंसिटी क्या होता है, 100 सेंटीमीटर 1000 mm ले लो by 365 into 24 because this is average annual rainfall. देखो एक बार, average annual rainfall, so 1000 by 365 into 24 I. So now we will take a discharge meter cube per second, C 0.6 I 1000 by 365 into 24 into area 365 divided by 360, this one. And we need answer in per day. But we are getting per second into 24 into 3600. 24 into 3600. अब देखो इतना आसान है, ये पूरा कट हो जाएगा. 365 24 पूरा कट हो गया. 6000 मीटर क्यूब पर डे. समझ आ रहा है? बेसिक से चलना पड़ेगा. अब इतना भी इंटेलिजेंट होगा, देख के आंसर देने के ट्राई मत करो प्लीज. यू आर टू मच इंटेलिजेंट, हम एक्सेप्ट करेगा, बट बाय चेकिंग, बाय सीइंग, हवा में कैलकुलेट करके आंसर मत दे दो. पेपर लेके लिख के सॉल्व करो, देन ओनली यू गेट द आंसर. हवा में कुछ भी मत करो, ये आपका लाइफ है बेटा, हवा में कुछ भी मत करो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा करेगा, एग्जाम में हवा में कैलकुलेट करने का पूरा जल में जल जाएगा. इफ यू कैलकुलेट इन एयर, इट गो टू वाटर. लक्की गारू, दिस इज सेंटीमीटर पर ईयर से आवर को कन्वर्ट करें 1 ईयर 365 डेज 24 आवर्स. विल सब्स्टिट्यूट इन आवर फार्मूला. दिस इज आवर फार्मूला, CIA by 360. This is our formula. So according to our formula, it gives per second. Then day के लिए 1 day के लिए 24 into 360. 1 day के लिए 24 into 360. Obviously, bubble gar. Conventional flow duration curve is a plot drawn between. Give in the poll. Poll में दे दो. Give in the poll. ये तो भी गेट क्वेश्चन है, देखो. गुड मुसाफिर, ऋषिकेश भैया, सिराज गारू. गुड अनवर, सियोना, बबलू, रितुल, दिव्यांशु, सिंधु, सत्येंद्र, केसर. तो ये तो लिख दिया, ग्राफ ड्रा करके भी बोल दिया ना. डिस्चार्ज वर्सेस परसेंटेज ऑफ टाइम एक्सीडेड और इक्वल. चेक करो नोट्स में. Conventional flow duration curve is a plot drawn between flow rate discharge versus percentage of time of flow exceeded. नोट्स में है या नहीं? बोलो बेटा. Then why are you giving wrong answers? आसान क्वेश्चन में गलत क्यों कर रहे हैं? देखो इतना आसान क्वेश्चन में गलत करने के बाद टफ वाला और गलत हो जाएगा. ये तो आसान क्वेश्चन है, डिस्चार्ज वर्सेस परसेंटेज ऑफ टाइम. दे दो पोल में. गुड कृष्णा, अच्छा गारू. Maximum possible discharge from a small catchment corresponding to a particular rainfall intensity, independent of which of the following, not dependent on which of the following.
वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज क्या लगता है, क्यू मैक्स. गुड रितुल अंडर somebody came. Q max is equal to CIA by 360. So ये भी आपको डिपेंडेंट है, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म तो डिपेंडेंट है. स्टॉर्म ड्यूरेशन बिकॉज इंटेंसिटी डिपेंड ऑन स्टॉर्म ड्यूरेशन, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन स्टॉर्म ड्यूरेशन. ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेंथ एंड स्लोप, एरिया ऑफ कैचमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व. सो कहाँ भी हम सॉइल मॉइस्चर के बारे में बात किया, दिस इज द आंसर, इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर. इन्फिल्ट्रेशन में सॉइल मॉइस्चर का बात किया, रन ऑफ में हम कभी भी सॉइल मॉइस्चर के बारे में नहीं बात किया. We discussed in the infiltration about soil moisture, but not in the runoff. An urban area has a runoff coefficient of 0.3. Runoff coefficient is 0.3. Retention is defined. Now here we are talking not retention. Area 0.85. So 85 hectare na 0.85 kilometer square. Maximum possible depth of rainfall with a 25-year return period is as below. If culvert for a drainage at the outlet of this area designed for a return period of 25 years. सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो इन्फिल्ट्रेशन कम होता, और वो ज्यादा होगा सी डिपेंड करेगा. ये तो हम एक्चुअली ऐसा बोलेगा, सॉइल मॉइस्चर के बारे में बात करेगा ऐसा बोलेगा, बट एज पर आवर मैक्सिमम डिस्चार्ज, इट इज नॉट अबाउट डे टू रेन वेरिंग डिस्चार्ज. दे आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम पॉसिबल हाईएस्ट पीक डिस्चार्ज. इफ यू टॉक डे 1 डिस्चार्ज Q1, डे 2 डिस्चार्ज Q2, डे 3 डिस्चार्ज Q3, डे टू डे वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर कैपेसिटी. बट यू आर टॉकिंग व्हाट इज मैक्सिमम डिस्चार्ज, हाईएस्ट डिस्चार्ज Q max फ्रॉम द कैचमेंट. इट्स नॉट Q1, Q2, Q3 theoretical discharge. So we can depending on only formula on the catchment characters, not practical. Estimate the required peak flow rate. Time of concentration is 30 minutes. देखो time of concentration is 30 minutes. That itself taken as rainfall duration. And for 30 minutes rainfall duration, what is the depth? 50 mm. So intensity 50 mm depth. 30 minutes means 0.5 hours. So intensity 100 mm per hour. Now Q, see 0.3, intensity 100, area 85 by 360. So we are worrying a lot. इतना बड़ा टेबल दिया, टेबल में क्या क्या लिख दिया हमको पता नहीं, क्या करेंगे? And we think what we can do with return period. 30 minutes time of concentration given, 5.4 A by TC plus B. पूरा नहीं चाहिए, depth 30 minutes time of concentration के लिए 50 mm depth by duration. You get the value. समझ आ रहे हैं? ज्यादा दिमाग कभी कभी गलत कर जाएगा. If you put unnecessary things in the brain, निपुण गारू, that unnecessary things will spoil your answer. आसान में कर जाएगा. हाँ, आई फार्मूला यूज मत करो. If you don't use, is it clear now? Clear, chalo. If you don't have the data about depth, no information about depth, then only you use intensity time of concentration formula. If you have a depth and a time of concentration, always you take depth by time, intensity. Okay? एक बार फिर से, और किसी को चाहिए? अरे बाबा, they have given the data. सुनो. They have given time of concentration as 30 minutes. Time of concentration as 30 minutes. Then durations are given 30 minutes. For every 30 minutes duration, depth is provided 50 mm. So 30 minutes is equal to 0.5 hour, depth is 50 mm, intensity 50 by 0.5, 100 mm per hour. A table तो पूरा का पूरा क्या दिया हमको? टेबल में 5 minutes, it is not mm actually, it is minutes duration. 5 minutes के लिए 17 mm, 10 minutes के लिए 26 mm, 20 minutes के लिए 40 mm, 30 minutes के लिए 50 mm. 30 minutes time of concentration या duration of rainfall को 50 mm. So intensity क्या होता है? 50 mm by 0.5 hour, 100 mm per hour. Reminding तो हमारा फार्मूला CIA by 360. समझ आ रहे हैं नवनीत? No need of return period, no need of table, no need of 25.4 A by TC plus B. क्योंकि डेप्थ लगा दिया क्वेश्चन में डेप्थ दिया. अच्छा गारू, ये तो केपीएससी है. केपीएससी पता है आपको? ईएससी नहीं, केपीएससी. केपीएसआर सर्विसेज एग्जामिनेशन. इट्स नॉट ईएससी. हाँ, ये पूरा कंफ्यूजन में चलेगा पक्का नवनीत. पूरा रिटर्न पीरियड देखकर कंफ्यूजन में चलेगा. रिटर्न पीरियड से कुछ करना पड़ेगा. अब इंटेंशन ऐसा हो जाएगा, वी हैव टू डू समथिंग विद रिटर्न पीरियड. डेटा दिया, हम कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, डेटा में दिया तो पूरा मत करो. नॉट योर स्टेट, लक्ष्मी गारू, ये तो नॉट योर स्टेट. द कैचमेंट इज 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 12.47 as per Dickens coefficient, Dickens formula. What should be the answer? Comment box में बोलो फटाफट. Dickens formula Q is equal to
CD into a power क्या होता है a power 3/4 CD into a power 3/4 CD 12.47 a is 100 power 3/4 कंफ्यूजन में b दिएगा बेटा हु इज गिविंग बी ज्ञानेंद्र गारू कंफ्यूजन जल्दी देने का चक्कर में b दिएगा 12.47 into 100 power 3/4 क्लियर ना उल्टा पलटा हो जाएगा कभी कभी डिकेंस को 2/3 ले सकता है कंफ्यूजन एग्जाम में एग्जाम टेंशन में डिकेंस को 2/3 ले सकता है गलत है it rains between 2 pm and 3 pm entire area just starts contributing 3 pm at outlet time of concentration will be पोल में दे दो give in the poll very good अभय आशीष very good अनवर सियोना ऋषिकेश दिव्यांशु दिव्या दिशा रितुल श्रीराग गारू अच्छा लक्की सिंधु सत्येंद्र नवनीत मुसवेर सतीश प्रशांत बबलू if it rains between 2 pm and 3 pm means rain started at 2 pm catchment rain started at 2 pm this water 5 pm then basin area start contributing at 3 pm at outlet means outlet में पानी कब आ गया outlet में पानी 3 pm आ गया so here to here what is the time taken 1 hour that is the time of concentration understand is that clear हो गया बाबू चलो next hydrology class is on 1st June 2 days you have holidays okay next important chapter you know na hydrograph 100 star mark chapter 100 star mark chapter okay and ye baat suno 30th means tomorrow every day we have 5:30 to 7:30 we are starting new air pollution course everyone can do join irrespective of whether you did environmental or not irrespective of whether you did environmental or not directly you can join this okay why I have to change my timing it is my universal timing आपके लिए हम टाइम नहीं चेंज करेगा ये तो मेरा यूनिवर्सल टाइम है you can change your schedule सतीश शर्मा I am taking at this time from April 2020 since last 4 years आज तो डबल क्लास इज देयर सिलिगारू आज तो डबल क्लास इज देयर so today also we start new chapter disposal अरे आप डबल क्लास में आपको क्लैरिटी दिया ना, व्हाई आर यू आस्किंग अगेन एसडब्ल्यूएम? ये नहीं चाहिए बेटा केसर आपको एनवायरनमेंट को जरूरत नहीं, डायरेक्टली एयर पोल्यूशन क्लास स्टार्ट करो, ठीक है? डायरेक्टली एयर पोल्यूशन क्लास स्टार्ट करो। ये पोल्यूशन सेपरेट लॉन्च कर दिया बेटा, वो भी बोल रहे ना, ये पोल्यूशन सेपरेट कोर्स कर रहा है। इट इज नॉट आई एम डूइंग इन एनवायरमेंटल, गेट सिविल के लिए, गेट एनवायरमेंटल साइंस पेपर के लिए, दोनों के लिए सेपरेटली लॉन्च कर रहा है ये पोल्यूशन। ओके, एनवायरमेंटल कोर्स में पूरा खत्म हो जाएगा एक्सेप्ट एयर पोल्यूशन, एक्सेप्ट एयर पोल्यूशन। ये तो कवर हो जाएगा अच्छा गारू, क्योंकि हम एनवायरमेंटल पेपर कर रहे हैं ना। अच्छा जी, एनवायरमेंटल पेपर कर रहे हैं ना, इनका सिलेबस के अंदर ये तो कवर हो जाएगा आपको, डोंट वरी, वी विल ब्रिंग दैट इन फ्यूचर। ये पोल्यूशन 60 to 70 पेजेस हो जाएगा सीधा। अगर 15 जून तक चलेगा मुसाफिर, 15 जून तक। ओके, सिविल पेपर में एयर पोल्यूशन से 2 to 3 मार्क्स, सिविल पेपर में, ईएस पेपर में 10 मार्क, एयर पोल्यूशन से ईएस पेपर में 10 मार्क है, सिविल पेपर में 2 to 3 मार्क। चलो भाई, आज तो क्लास खत्म हो गया। विल मीट, डोंट फॉरगेट हाइड्रोग्राफी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 जून से शुरू करेगा। एंड दोस हु हैव बैकलॉग्स ऑफ हाइड्रोलॉजी खत्म करो 2 दिन में, रिवाइज करो फर्स्ट चैप्टर से, अभी तक क्या हो गया रिवाइज करो, आ जाओ हाइड्रोग्राफ अच्छे से करेंगे 1 जून से, ठीक है? बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस।